हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन। इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे अपने प्रीवियस वीडियोस में। आई होप कि आपने उन सभी को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ स्टिल यू हैवंट सब्सक्राइब। तो विजुअलाइजिंग द नेशन, इस टॉपिक में बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम किसी रूलर की बात करते हैं, अगर सपोज करो मैं अकबर की बात करता हूँ या अशोक की बात करता हूँ, ठीक है, या लेटर महात्मा गांधी की बात करते हैं, ठीक है, या अपने किसी भी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें या लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, व्हाट डू वी फाइंड कि दीज पीपल कैन इजीली बी आइडेंटिफाई। इनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। व्हाई? व्हाट इज द मेन रीजन? बिकॉज these people, these were actually the persons who were remained alive, who had lived at some point of time on this earth. We have their images, we have their statues with us, और हम जो है वो easily उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये अकबर का पोर्ट्रेट है और ये अशोका का पोर्ट्रेट है, या ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोर्ट्रेट है, ठीक है, या ये समुद्रगुप्त का पोर्ट्रेट है, या ये महात्मा गांधी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं, या ये सुभाष चंद्र बोस हैं। हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दे वर अलाइव, दे वर रिमेन एग्जिस्टेड, दे वर लिव्ड ओवर this earth at some point of time. But what about something which does not actually exist, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते। एग्जिस्ट का मतलब जिसको हम क्लियरली देख नहीं सकते, है ना। यानी कि आप कह सकते हो एक इमेजिनरी आइडिया, हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें। नेशन की अगर हम बात करते हैं तो नेशन इज समथिंग, एक ऐसा आइडिया है। नेशन, अब बेसिकली अगर हम नेशन की बात करते हैं तो नेशन भी नोबडी हैज सीन नेशन, लेकिन हम सभी लोग ये फील करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर नेशन को, एक पर्टिकुलर देश को हम बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम जब नेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक तुरंत एक चीज आती है, भारत माता। नाउ द क्वेश्चन अराइज, हैज एनीबडी सीन भारत माता? उनको देखा है रियल लाइफ में? नोबडी हैज सीन इन रियल लाइफ भारत माता। सिमिलरली हम किसी भी नेशन की बात कर सकते हैं। एवरी नेशन, वहां पर रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं उनमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग, यानी कि फीलिंग ऑफ वननेस है। वो ये फील करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग करते हैं, और अपने नेशन को वो किसी न किसी ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं। दैट मीन्स दे हैव पर्सोनिफाइड देयर नेशन। दिस वाज व्हाट the artists have done during the 18th and 19th centuries in Europe। यूरोप के अंदर 18th और 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, वहां के जो आर्टिस्ट थे, वहां के जो पोएट्स थे, उन्होंने क्या किया, एक इमेजिनेशन किया, उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई किया। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड personification of nation, personification of nation।
Personification, that means representing some abstract idea as if it were a person. Right? So that means here we are talking about the personification of nation. That means presenting the nation as if it were a person. So ये basically किसने किया? The artists and the poets in 18th and 19th centuries. Yeah. If you remember, after the French Revolution, the ideas of liberty and freedom justice were represented through red cap, broken chain, or a lady whose eyes were blindfolded and holding a balance. राइट? तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, चाहे वो फ्रीडम था या जस्टिस थे या लिबर्टी थी, इसको इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को उन्होंने क्या किया? सिंबल्स के थ्रू या फीमेल फिगर्स के थ्रू उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया. एंड दीज फीमेल फिगर्स दे वर कॉल्ड फीमेल एलिगरीज. Right? So female allegory, you can say a female figure used to represent some abstract idea. तो अगर हम 18th और 19th सेंचुरी यूरोप की बात करें तो यहां पर भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को रिप्रेजेंट किया एज इफ इट वर अ पर्सन, यानी कि फीमेल एल्गरीज. इन फ्रांस क्रिस्टिन मैरिड became the allegory of the French nation. हाँ, एक चीज याद रखना पड़ेगा यहां पर कि ये जो फीमेल एल्गरीज थी which were used to represent the nation through the female figures, but those female figures did not resemble to any particular women in the real life. वो रियल लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर विमेन से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करते थे, रिजेंबल नहीं थे. राइट? उनके जो
characteristics they were basically representing the characteristics of the nation with which the people can relate themselves. ये उन ideals को, उन characteristics को represent करते थे जो लोग अपने देश के अंदर देखना चाहते थे. Right? So here, in case of the French nation, Christine Marin became the allegory of the French nation. Her ideals, her characteristics, rather I should say, her characteristics were taken from the ideas, from the ideals of liberty and republic, जिसके अंदर the red cap, the tricolor, and the cockade were used to represent the French nation. अब जो स्टैच्यूज थी, the statues of Marin, they were erected at public squares, यानी कि जगह जगह पर, चौराहों पर क्या किया गया, मैरिन की मूर्तियां लगाई गई, so that the people they could relate themselves with the idea of nation, with the ideals of the nation. And her images were also portrayed on coins as well as on stamps. So her statues were erected at public squares, as well as her images were portrayed on coins and stamps. सिमिलरली अगर आप बात करते हो तो जर्मनी के अंदर भी, इफ वी टॉक अबाउट जर्मनी, ठीक है, इन जर्मनी ऑल्सो, जर्मेनिया, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर, Germania became the female allegory of the German nation. अब जो विजुअल जो इमेजेस थे जर्मेनिया की, उसमें जर्मेनिया को शो किया गया दैट इट वाज वियरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, बिकॉज in Germany, German oak is considered to be the symbol of heroism. तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, in visual images she had represented wearing the crown of oak leaves,
since the German oak is the symbol of heroism, यानी कि जर्मन ओक जो है ये हमारा हीरोइज्म का क्या है, सिंबल. सो दिस इज द रीजन दैट वाई द फीमेल एल्गरी ऑफ the German nation, or you can say Germania, it was represented as wearing the crown of oak leaves. क्यों? क्योंकि ये हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है. सो आई होप कि हमारा ये पूरा टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है. आई होप दैट यू विल बी एबल टू प्रिपेयर दिस टॉपिक. इस टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफ एटलीस्ट 3 मार्क्स. 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है. ठीक है, दैट हाउ वर द आइडियाज ऑफ फ्रेंच एंड द जर्मन नेशन वर टू बी रिप्रेजेंटेड. ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना. आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट and also subscribe the channel Incredible Scholars. Thank you.